Hi guys, today in this session I start with one of the important chapter of your SYJC bookkeeping and accountancy syllabus, and the name of the chapter is Bills of Exchange. Bills of Exchange is the name of the chapter. Last year in FYJC you all have done final accounts. We prepared balance sheet in FYJC ka final accounts. We prepared balance sheet in single entry. Even this year, admission, final accounts, we made balance sheets, and you all have seen in the balance sheet liability side pay there was bills payable, and asset side pay there was bills receivable. Liability side pay bills payable, asset side pay bill receivable. And I had mentioned while starting SYJC final accounts that later on we will come across a chapter, Bills of Exchange, where we will study how bill receivable and bills payable are created, how bill receivable and bills payable come into picture. So now in this chapter we will study how bill receivable and bills payable come into picture. Now see, before I get into the main part, I'll just focus on the syllabus point of view. I had explained you earlier also in the video of syllabus and paper pattern. Those who have not seen, please see that again. You all have 20 marks objective, correct? You will be getting any 4. In that, if you see in the list of objectives I had mentioned that there is 5 mark ka Proforma of bills of exchange. 5 mark ka Proforma of bills of exchange. Now, Proforma of bills of exchange may come, may not come. Plus, there will be 10 marks ka sum plus couple of marks of objective. So, in case Proforma comes, so 5 of Proforma, 10 of journal ka sum, and another couple for objectives. So, around 17 to 18 marks ka weightage will be in this chapter, which will be higher than the weightage of final accounts, subject to Proforma coming in the objective. Now, what I'll be doing today? First, I'll explain you bills of exchange, what are the parties to bill of exchange. Then, in this session, we will study how to make that Proforma, which comes 5 marks ka objective. Now, in the Proforma, there are 3 variations. I will take a sum, and in the same sum, I will show you all the 3 variations. That is there for your syllabus. Nothing else is there as far as the Proforma is concerned. And after this, I will take another session where I'll explain you the concept of accounting, where we will study how journal entries are passed, basic journal entries, and how the journal bill receivable and bills payable is created. So in this session, I am not focusing anything on accounting. That will be the next session. This and the next both will be open on YouTube. Okay, so today ka session is devoted to Proforma bills of exchange. Please understand very carefully, because if it comes, it is a bonus 5 mark ka question. There is nothing to lose in that. Even to make a silly mistake is a difficult task as far as Proforma is concerned. So isko barabar dhyan se kar lena. Okay. Now before I come to the Proforma ka part, let's understand what is bills of exchange and how the process of bills of exchange works, and which are the parties to bills of exchange. Okay. Now see, first of all, restricting the explanation to the extent of your syllabus. Bills of exchange first of all comes into picture only when the transaction is a credit transaction. Bills of exchange comes into picture only when the transaction is credit transaction. Bills of exchange comes into picture only when the transaction is a credit transaction. If it is a cash transaction,
If it is a cash transaction, bills of exchange doesn't come into picture. For bills of exchange to be created, the first thing is there has to be a credit transaction. Okay, now let's see this example. I'm going to give you similar example in the next class also when it comes to accounting, but understand this. There is Mr. X, okay, who sells goods on credit to Y. Okay, Mr. X selling goods to Mr. Y on credit. Mr. X selling goods to Y on credit. Say for example, the amount is 25,000. Sorry, amount is 25,000. Now when I say there is a credit transaction, in credit transaction there has to be some credit period. In credit transaction there has to be some credit period. That credit period can be 15 days, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, depending upon industry to industry. Let's take an example. I'm assuming in this case the credit period is 2 months. I'm assuming in this case the credit period is 2 months. Now see, X has sold to Y. Today it is a credit transaction. There is no money transaction involved. Money matlab there is no receipt and payment of money. Value of goods is there 25,000, but receipt and payment of money is not there. So can I say, considering this transaction, after the period of 2 months, X has to receive from Y. After the period of 2 months, X has to receive from Y, or after 2 months, Y has to pay to X. I'll repeat. After 2 months, X has to receive from Y, or Y has to pay to X. Now, what if Y doesn't pay? X उसको reminder देगा. After that, what still if he doesn't pay? X can go to the court, बराबर? But going to the court with just a bill makes his case stronger. So what he does, now before that again I'm repeating, I'm just restricting my explanation to the extent of your syllabus, because SYJC में वो जो है, that point I am stressing. I can teach you many things, I can explain you many things, but वो syllabus में नहीं है, तो तुम लोग बोलोगे सर ज़्यादा पका रहा है इसके लिए. Okay, so what will happen? X will take an undertaking from Y on a stamp paper. X will take an undertaking from Y on a stamp paper that I have to receive from you 25,000 rupees. After 2 months, you will pay to me. X will take an undertaking from Y on a stamp paper that after 2 months, Y will pay X rupees 25,000 for this value of goods. Okay, X agree करेगा. Now it is stamp paper. So X और Y दोनों साइन करेंगे. जब तक दोनों साइन नहीं करेंगे, बिल का कुछ मतलब नहीं है, डॉक्यूमेंट का कुछ मतलब नहीं है. Got it? So Y agrees, X will put his signature, and Y will put his signature that okay, I agree, I sign it, that you will get your money after 2 months. Now ये केस में क्या हो जाएगा? X will be more confident, legally he will be more secured because it is signed on a stamp paper. तो ये जो stamp paper है ना, that is nothing but bills of exchange. ये जो stamp paper है, that is my bills of exchange. How to make this, that we are going to study
after some time in this session only. So this document is bills of exchange. It is nothing but an order where written consent is taken from Y that on the due date he will pay the money to X. Bills of exchange is an instrument which is a part of negotiable instrument act. उसका definition है, वो objectives में है. I don't want to stress much on that, but right now I'm just making it very simple. It is a negotiable instrument act का document where Y makes the order and takes the consent of Y in writing where he agrees to pay X. Got it? लोगों को चाहिए तो ये देखो legal definition. As this is there in all the books. As per the Negotiable Instrument Act 1881, bills of exchange is defined as an instrument in writing. Writing में होगा containing an unconditional order. Unconditional मतलब उसमें कुछ condition नहीं होना चाहिए. ठीक है भाई, ये जो agree हुआ है 25,000 after 2 months, जो तुम्हारा decide हुआ है वो extra conditions नहीं होना चाहिए. That is unconditional. Signed by the maker मतलब ये केस में X साइन करेगा. आगे directing a certain person to pay on demand or at a future date a certain sum of money. Directing a certain person, यहाँ पे वो person हो गया Y. Demanding a certain money, ये हो गया अमाउंट 25,000. आगे क्या बोलते हैं? ऑन अ फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट यहाँ पे हो गया आफ्टर 2 months. ओके, टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ये पॉइंट में थोड़ी देर के बाद आता हूँ. गॉट इट? सो दिस वाज द डेफिनेशन. ज्यादा लीगैलिटी में जाने का जरूरत नहीं है. आई एक्सप्लेन यू ऊपर ऊपर से व्हाट इज द डेफिनेशन एंड हाउ यू कंपेयर विद दिस. उतना याद रखो, बाद में आगे हम लोग डिटेल में करेंगे. Got it? So how to study, how to make this, that we are going to study. Now before we decide how to study this, understand one more thing. चलो इधर explain करता हूँ. Important thing what you should know is how many parties are there to bills of exchange. Let me make you understand this. Then I'll show you how bills receivable और bills payable का distinction करेंगे, and then I get into the Proforma part. What are the parties to bills of exchange? Okay, what are the parties to bills of exchange? Very important from objective point of view also. First party. Now first party will be the party who has to recover the money. जो ये बिल बनाएगा, बिल वही बनाएगा जिसको पैसा लेना है. ये केस में कौन है? X. So the person who will make the bill, the person who has to receive the bill, that will be the first party, and that party is called as the drawer. Drawer means the person who draws the bill, who makes the bill, who has to receive the money. I'm putting in brackets, in this case, drawer is Mr. X. In this case, drawer is Mr. X. Got it? So the first party to bill of exchange is drawer. Drawer is the person who makes this document, who gets this document done. He draws a bill on Y where Y will agree to pay. So the first party is drawer, जो बिल बनाएगा जिसको पैसा लेना है. Okay, understand, very important because Proforma is based on this one. Second, the second party, first party कौन था? जिसको पैसा लेना है. Now second party will be the party जिसको पैसा देना है. That party who has to pay money will be the second party. That party who has to pay the money will be the second party, and that is nothing but Y. So Y will be the second party to bills of exchange, the person who has to pay or on whom the bill is drawn. X draw कर रहा है, किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है?
जिससे पैसा लेना है. किससे लेना है? Y. So Y becomes the second party and Y will be called as drawee. Drawee. Drawee मतलब that person who has to pay money. Drawee matlab that person who has to pay money, and in this case drawee is nothing but Y. In this case drawee is nothing but Y. So drawer means that person who draws the bill, who has to recover the money, and drawee is that person on whom the bill is drawn, जिसे पैसा लेना है. So first party drawer, second party drawee. Understand this because ये समझ में आएगा. Now guys, be careful here. Very important for objective also. Third party, third person. अभी तुम लोग बोलोगे सर आपने ये एग्जाम्पल दिया उसमें तो दो ही पार्टी एक्स और वाई, तो तीसरा कहां से आएगा? Understand this. The third party is called as, before I give the example, I'll give the name, is called as the payee. Third party is called as the payee. मतलब payee is that person to whom the bill is payable. Payee is that person to whom the bill is payable. जिसको पैसा मिलेगा that person is paying. अभी देखो इसमें दो ही पार्टी है x and y, तो पैसा किसको मिल रहा है? x को ही मिल रहा है. So in this example also payee will be x. In this example payee will be x. So where there are only two parties, drawer and payee will always be the same. Where there are only two parties, drawer and payee will be the same, and where there is a third person, there will be a separate payee. कैसे? Now understand this. X को Y से 25,000 रुपया लेना है. X को Y से 25,000 लेना है. Now there is Mr. Z. X को Z को पैसा देना है. Understand? X has to take from Y. X has to pay to Z. So X has to pay to Z. Same amount. I'm assuming same amount, 25,000. Now what will happen? X क्या बोलेगा Y को? अरे देख मुझे Z को 25 देना है, तू मुझे देगा, फिर मैं Z को दूं, मेरे अकाउंट में लेके. एक काम करना, ड्यू डेट पे तू इंस्टेड ऑफ पेइंग टू मी तू सीधा सीधा Z को दे दे. सो इन दिस केस Z becomes the third person. In this case Z becomes the third person, or we call it as third party. So now what will happen? On the due date Y will pay the money instead of X to Z. So ये केस में I am putting a slash. ये केस में Z हो गया थर्ड पार्टी, बिकॉज X ने Y को इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई ठीक है तू स्टैम्प पेपर साइन कर रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं ये बिल Z को ट्रांसफर करूंगा. व्हाट इज दैट? दैट आल्सो विल सी इन डिटेल. ड्यू डेट पे इंस्टेड ऑफ यू पेइंग टू मी तू सीधा सीधा Z को दे दे, तो तेरा पैसा आ गया, मैंने भी Z को दे दिया, इनडायरेक्टली तीनों का काम हो गया. ऑल थ्री अकाउंट्स आर सेटल्ड. Y says okay, Z says okay. Z बोलेगा यार मेरे को 25,000 दे दे, X तू दे या तेरे बिहाफ पे Z दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरा 25,000 आने दे. So all the people agree. So in this situation the third party comes into picture, Z. So I'll repeat guys, जहां पे खाली दो पार्टी है ड्रॉअर एंड ड्रॉई, payee and drawer will be the same. The third person will also be the drawer. And जहां पे एग्जाम्पल में Z दिया है, so Z becomes the payee. So again I'll repeat, drawer is the person who draws the bill, जिसे पैसा लेना है. ड्रॉई जिसके ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे, on whom the bill is drawn, जिसे पैसा देना है. And payee
is the person who will receive the money. If there is no third party, X becomes the payee and the drawer, and if there is a third party, that becomes payee. Now when I do bills of exchange, now there can be only drawer drawee, there can be payee also. So in one sum only, I will show all the variations of your particular syllabus. Got it, guys? So before we start pro forma of bills of exchange, you should know what is bills of exchange, and you should know what is drawer drawee and payee. Got it? Now before I start, one last thing. नेक्स्ट क्लास में मतलब व्हेन आई डू जर्नल एंट्री आई शो इन डिटेल. एसेट साइड पे जैसे स्टार्टिंग में बोला, एसेट साइड पे बिल रिसीवेबल आता है, लायबिलिटी पे बिल्स पेएबल. सो जब ये बिल ड्रॉ होगा, एक्स को पैसा लेना है, तो एक्स के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे होगा बिल रिसीवेबल 25,000 एंड वाई के बुक्स में, वाई के बैलेंस शीट में bills payable होगा 25,000. When the bill is drawn, bill of exchange is created. Understand this. Detail में when we pass the accounting entries, next class में I'll show you, मतलब YouTube के open class में. Right now just understand, when a bill of exchange is created, जिसे लेना है उसके लिए bill receivable, जिसे देना है उसके लिए bills payable, जिसे लेना है उसके लिए bill receivable, जिसे देना है उसके लिए bills payable. That is bills of exchange. So in this case, when X draws a bill on Y, X in his books will debit bill receivable, which will go on his asset side. Y को देना है, Y in his books will credit bills payable, which will go on the liability side. यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, यहाँ के डेबिट क्या होगा, that we will see when we start the accounting entries. Got it, guys? So whatever I have explained, वापस रिवाइंड करके सुन लो, because this is a YouTube open video. Okay? And now I start with Proforma. I have made a sum and I have divided in 3 parts. So all the 3 varieties I can do in one sum. I'll just be back. I'll just rub the board and I'll be back with the Proforma ka part. Okay, guys. Now see. You'll have the question. I'll just read the question. Extra question I have made. Prepare a bill of exchange from the following details. Drawer, Rohit Sharma, Mumbai. Drawee, Virat Kohli, New Delhi. I'm a big cricket fan, so मैं sound like normally cricketers के नाम डालता हूँ. IPL का टाइम रहेगा, I put the name of IPL teams. Okay. Date of bill 1st October 24. Date of acceptance 4th October 24. Period 3 months, amount 50,000. Period 3 months, amount 50,000. This is A part. Then there is B and C. B and C बाद में consider करेंगे. First, let's solve the A part. Now what you have to do? Prepare a bills of exchange. This is called as Proforma. जो अभी बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना, you will get 5 marks का sum. 5 mark का sum objectives में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. Those are still confused. मैंने क्यों बोला? Please go back and see the video. YouTube पे open है, SYJC का syllabus and paper pattern का discussion. Okay? Now see. Let's see how to prepare. Now पहले तुम एक बड़ा बॉक्स बनाओगे. वो बॉक्स बनेगा पेंसिल में. Don't use pen. तुम्हें तुम्हारे नोटबुक में बॉक्स पेंसिल में बनेगा. Okay? So what you will do? You can leave the margin if you want. Margin use करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. Okay? This will go little bit more than half a page. Half page से थोड़ा ज्यादा. अभी देखो, you will make a line pencil से on the left, on the top, on the right. बॉक्स को बंद नहीं करना. एटलीस्ट नाउ, आगे जाके एक बार तुमको आइडिया आ गया, बाद में तुम लोग को पता चल जाएगा how much time you takes, but don't close the box right now. Little bit more than half a page, or to be on the safer side, 3/4 of the page, 75% of page you take. Okay, let me check पूरा बॉक्स एंगल में कवर हो रहा है.
या ओके, डोंट क्लोज द बॉक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉक्स को बंद नहीं कर। एक मिनट में थोड़ा या जूम करता हूं थोड़ा, या डोंट क्लोज दिस बॉक्स। ओके, ध्यान से देखो, आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर यू। सेंटर में गिव द हेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेंटर में गिव द हेडिंग बिल्स ऑफ, सिंगल लाइन ही करो चलेगा, गिव द हेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेंटर में गिव द हेडिंग bills of exchange. Now listen what you will do. What I told you, this is made on a stamp paper. Now practical life में थोड़ा format अलग होता है, because वो तुम एक पेज पे नहीं बना सकते हो. Now that's why it is called as Proforma. Proforma मतलब basic format of bills of exchange. Okay. Now as I told you, it is prepared on a stamp paper. So what you will do, ये तुमने हेडिंग लिखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बराबर। लेफ्ट साइड पे आ जाओ, यहां से थोड़ा स्पेस छोड़ना, एंड दिस बॉक्स ऑल्सो यू विल मेक इट इन पेंसिल। दिस बॉक्स ऑल्सो यू विल मेक इट इन पेंसिल। यहां से थोड़ा स्पेस छोड़ना एंड मेक इट ऑफ अराउंड 2 और 3 लाइन्स, जैसे तुम कंफर्टेबल हो। 2 या 3 लाइन का बनाओ ये बॉक्स, एंड ये बॉक्स में तुम क्रॉस लिखना, स्ट्रेट लिखोगे तो भी चलेगा, स्टैम्प। स्टैम्प मतलब दिस इज योर स्टैम्प पेपर। एज आई टोल्ड यू, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा अलग होता है, बट यहां पे यू कैन नॉट मेक बिकॉज यू नीड मोर पेजेस, बट दिस इज द बेसिक थिंग। सो स्टैम्प, ये बॉक्स पेंसिल में बनेगा, यस। द वर्ड स्टैम्प यू राइट इट इन पेन। वर्ड स्टैम्प तुम पेन से लिखो, बट ये तुम पेंसिल से बनाना। दिस बॉक्स यू मेक इट इन पेंसिल एंड स्टैम्प पेन में लिखो। गॉट इट गाइस? सो आई रिपीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेंटर में, लेफ्ट कॉर्नर में बिलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां से थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 और 3 लाइन्स का मेक अ बॉक्स इन पेंसिल, एंड इन दैट बॉक्स यू राइट स्टैम्प। इन दैट बॉक्स यू राइट स्टैम्प। नाउ ये था लेफ्ट कॉर्नर। नाउ कम टू द राइट कॉर्नर। नाउ कम टू द राइट कॉर्नर। नाउ सी, ये लाइन में, या ये जो स्टैम्प का ऊपर का लाइन है, ये लाइन में आओ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। यू विल राइट द डिटेल्स ऑफ द ड्रॉर। यू विल राइट डिटेल्स ऑफ द ड्रॉर। कौन है ड्रॉर? रोहित शर्मा, मुंबई। सो सी, ये कॉर्नर पे आओ, देखो सी, ये लाइन में right there, Rohit Sharma. Okay, right there, Rohit Sharma, and address of course पूरा डिटेल में नहीं है। Next line, Mumbai. If they give you more details, suppose they say Rohit Sharma, Worli, Mumbai. So Rohit Sharma next line पे वर्ली, उसके बाद मुंबई। रोड दिया रहेगा, so Rohit Sharma write the name of the road, वर्ली, मुंबई। Okay, I have made it very simple. So left side पे stamp, राइट साइड पे डिटेल्स ऑफ द ड्रॉअर, उसका नाम और एड्रेस। नाउ हियर यू विल पुट द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। जो दिन पे बिल ड्रॉ हुआ है वो दिन का डेट। कभी ड्रॉ हुआ है, देखो डेट ऑफ बिल दिया है 1 अक्टूबर। सो हियर यू कैन राइट ओनली 1 अक्टूबर चलेगा, और इवन इफ यू गिव द हेडिंग डेट ऑफ बिल, दैट इज ऑल्सो फाइन, but this is fine. Got it? So date of bill 1 October 24. I'll repeat. Center में bills of exchange, left corner में stamp in the box, box has to be in pencil, and right side पे Rohit Sharma, Mumbai, 1 October 24. Clear with this? Now guys, see what is the amount. The amount of bill is 25,000. The amount of bill
is 25,000. So that 25,000 in this pura format, I'll repeat, the amount of bill, sorry 25 है क्या, sorry 25 एग्जाम्पल में था, इसमें कितना है, सॉरी कितना रखा है मैंने, सॉरी 50,000, 25,000 एग्जाम्पल में था, अमाउंट ऑफ बिल इज 50,000, पूरे फॉर्मेट में 50,000 वर्ड्स में भी आएगा, डिजिट्स में भी आएगा, पूरे फॉर्मेट में 50,000 वर्ड्स में भी आएगा, डिजिट्स में भी आएगा. सो फर्स्ट आई विल टेक इट इन डिजिट्स. नाउ सी, ये स्टैंप हो गया, ये लाइन हो गया. फॉर बेटर एंड क्लियर प्रेजेंटेशन, इसके नीचे दो लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा, बट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन लीव टू लाइन्स. प्रिपेयर अ रेक्टेंगल बॉक्स. ये बड़ा सा 2 से 3 लाइन का, इसको तुम एक लाइन या 2 लाइन का करोगे तो भी चलेगा, या तो लेट मी राइट देन योर नो. नाउ व्हाट यू विल डू in this rectangle box, you will put the amount in digits. Rupee, this is Indian rupee sign. Sorry, मेरा drawing and craft बहुत weak है, so I'm just writing to the extent of best what I can do. Indian rupee sign. Okay, what is the amount? 50,000. So write 50,000 in digits. 0.00. You can write point. I have that habit of equal to sign. Equal to sign लिखो 0.00, or even if you write only 50,000 चलेगा, not to worry. I'll repeat. रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ, इसके बाद एक दो लाइन छोड़ के इंडियन रुपी साइन 50,000 0.00 equal to 00, or if you don't write this, only 50,000 is also fine. And some people write like that also. 50,000 ये करोगे तो भी चलेगा, but that is fine. Got it? After this, now see here, there is a difference of opinion. Some authors put this 50,000 after writing the 2-3 lines what I am going to write. This is also fine, but majority prefer this. Got it? Now see. Now, इसके बीच में एक या दो लाइन छोड़ना for better. Even if you leave one line, it's fine. But for better presentation and better more gap, make 2 lines. Got it? Now guys, after writing this 50,000, again एक लाइन या दो लाइन जैसे कंफर्टेबल हो, एक लाइन या दो लाइन छोड़ो, and now you will write some legal words in the next 2 to 3 lines. कैसे लिखोगे? सबसे पहले पीरियड देखो, कितना है पीरियड ऑफ बिल? 3 months. Now listen, after this 1 or 2 lines, put it in the paragraph form. स्पेस छोड़ देना थोड़ा. 3, don't write number 3, words में लिख लो. 3 months. See the words I'm writing. 3 months. Suppose they would have given you 40 days. You would have written FORTY 40 days. After date. Let's make it simple. After date. 3 months after date. Paid to. Now there are only 2 parties. B part may we will see when the third party comes. Me or my order. See the words, huh? 3 months after date paid to me or my order a sum of. Now start from here. Rupees. कितना है अमाउंट? 50,000. अभी वर्ड्स में आएगा. What I told you थोड़ी देर पहले. Amount in this format has to come in words as well as in digits. Sum of rupees 50,000 only for the value received. 3 months after date, paid to me or my order a sum of rupees 50,000 only for the value received. Value received मतलब
50,000 का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, सेल और परचेज. फॉर दैट ही हैज, देयर कैन बी बिल, ड्रॉइंग ऑफ बिल. सी, कीप दिस वन थिंग इन माइंड, this can be other than sale or purchase transaction only. Bills of exchange are of different types. तुम्हारे सिलेबस में ट्रेड बिल है. ट्रेड मतलब amount receivable occurs from business transaction of buying and selling. There can be other amounts also because of which bill can be drawn, but तुम्हारे सिलेबस में वो नहीं है. But even if there are other reasons, the format remains the same. अभी देखो, ये मैंने बोर्ड पे बनाया, तुम्हारे नोटबुक में 2 से 3 लाइन जाएगा, बिकॉज मेरा 2 में फिट हो गया, बिकॉज आई हैव यूज्ड मोर स्पेस. ओके, सो 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव. वैल्यू रिसीव मतलब जो वैल्यू का ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा सेल का, उसका 50,000. गॉट इट? फोकस ऑन दिस वर्ड्स. नाउ लिसन, what you will do after this line. For better presentation, leave 3 to 4 lines. After this line, for better presentation, leave 3 to 4 lines and write like that. 2 matlab you will send this bill. Who is the drawee? Virat Kohli. So to Virat Kohli. ओके, उसका एड्रेस दिया है, डिटेल में नहीं है. नेक्स्ट लाइन, न्यू दिल्ली. गॉट इट? टू विराट कोहली, न्यू दिल्ली, बिकॉज ये बिल विराट को जाएगा. नाउ व्हाट आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग, डोंट क्लोज द बॉक्स. नाउ यू कैन क्लोज, बिकॉज इसके बाद कुछ नहीं होगा. सो व्हाट यू कैन डू, आफ्टर न्यू दिल्ली एक लाइन छोड़ दो एंड क्लोज द बॉक्स. आफ्टर न्यू दिल्ली एक लाइन छोड़ दो and close the box. So to Virat Kohli and New Delhi. Got it? ये हुआ तुम्हारा फॉर्मेट. Now guys, very basic ना. स्टैम्प पेपर पे बना रहे हो. अरे भाई, जब स्टैम्प पेपर पे बना रहे हो, अगर किसी का सिग्नेचर ही नहीं है तो वो स्टैम्प पेपर वैलिड कैसे हुआ? अगर स्टैम्प पेपर पे बना रहे हो एंड किसी का सिग्नेचर ही नहीं है तो वो वैलिड कैसे हुआ? सो नाउ सिग्नेचर्स हैज टू बी मेड बाय बोथ ड्रॉअर एंड ड्रॉई. खाली ड्रॉअर साइन करेगा, उसका मतलब क्या है? ड्रॉई हैज टू अग्री ना, ओके बाय, आफ्टर 3 months आई विल पे यू और व्हाट एवर द पीरियड. सो नाउ फर्स्ट सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर. अभी देखो, ये लेफ्ट कॉर्नर है, जहां पे तुमने 2 लिखा है और जहां पे विराट कोहली लिखा है, सेम लाइन पे आओ. ईदर इन द लाइन ऑफ 2 और इन द लाइन ऑफ विराट कोहली. दिस विल बी साइंड. सो व्हाट यू विल डू, एस डी. एक्चुअल सिग्नेचर तो रोहित शर्मा करेगा ना, हम थोड़ी करेंगे. सो दिस इज अ नोटिफिकेशन, अ डिनोशन दैट दिस इज साइंड. हु इज द ड्रॉअर? रोहित शर्मा. नेक्स्ट लाइन पे रोहित शर्मा. दिस मीन्स एस डी साइंड बाय रोहित शर्मा. एक्चुअल लाइफ में रोहित शर्मा का एक्चुअल सिग्नेचर आएगा. सो रोहित शर्मा ने साइन कर दिया, फाइन. बट पे कौन करेगा? विराट कोहली. जब तक विराट कोहली एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं तुझे पे करूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है. अभी देखो ये क्यों लिखा है, नाउ वी आर सेंडिंग टू विराट कोहली. Now Virat Kohli has to accept the bill. So ये जो स्पेस है ना, मैंने तुम्हें why I told you to leave 3-4 lines here. So now what you will do, center ऊपर नीचे हुआ चलेगा. हाँ, हम लोग चेक क्रॉस करते हैं, वैसे क्रॉस करो and write the words accepted. Even if you write small में चलेगा, चलो स्मॉल में लिखते हैं. Accepted, इसको पूरा कैपिटल में लिखोगे तो भी चलेगा. हाउ वी क्रॉस चेक, वैसे क्रॉस लाइन करो, एक्सेप्टेड. इवन इफ यू पुट इट स्ट्रेट इट्स फाइन, बट जनरली इन योर सिलेबस इट इज एडवाइज टू पुट अ क्रॉस. सो 2 क्रॉस करके एक्सेप्ट, दैट मीन्स विराट कोहली ने ये एक्सेप्ट किया. अरे एक्सेप्ट किया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? साइन तो कर. हाउ? एस डी लिखा, सेम वे एस डी विराट कोहली. सो नाउ ड्रॉअर ने भी साइन किया,
ड्रॉई ने भी साइन किया, नाउ यू कैन से इट इज अ वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। याद रखना, जब तक ड्रॉर और ड्रॉई दोनों का साइन नहीं होगा इट इज नॉट वैलिड। अगर किसी एक पार्टी ने भी साइन किया, खाली रोहित शर्मा ने ही साइन किया, इट इज नॉट वैलिड। विराट का साइन खाली तो होगा ना, बिकॉज विराट बोलेगा पहले तू तो साइन कर, बाद में मेरी साइन करूं। सो विराट कोहली का साइन बाद में आएगा, बिकॉज पहले ये बिल बनाएगा, खुद साइन करेगा, फिर विराट कोहली को भेजेगा। सो सेकेंड सिग्नेचर विराट का आएगा। टिल द टाइम ड्रॉर एंड ड्रॉई, ये केस में रोहित एंड विराट डोंट साइन, इट इज नॉट वैलिड। नाउ विराट ने साइन किया, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी विराट में एक्सेप्ट ऑन द सेम डे और आफ्टर फ्यू डेज। सो सी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 4 अक्टूबर। सो यहां पे यू विल राइट द डेट 4 अक्टूबर। दैट मीन्स रोहित शर्मा ने बिल ड्रॉ किया 1 अक्टूबर को, विराट कोहली ने साइन किया 4 अक्टूबर को। रोहित शर्मा ने बिल ड्रॉ किया 1 अक्टूबर को एंड विराट कोहली ने साइन किया 4 अक्टूबर को। This is called as a valid bills of exchange and this is accepted. Now, this is a complete pro forma as per your syllabus and for making this you get 5 marks. I'm coming to B and C part, but first you have to understand this. Okay guys, देखो मैं पूरा रिवाइज करता हूँ। बॉक्स बनाओ पूरा, पेंसिल से बनाना, पेन से नहीं करना, 1 मार्क कट हो जाएगा। सेंटर में हेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट कॉर्नर थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ दो, इन पेंसिल मेक अ बॉक्स, स्टैम्प, अंदर का मैटर यू राइट इट इन पेन। दिस वाज लेफ्ट कॉर्नर, अभी राइट कॉर्नर आ जाओ। रोहित शर्मा ड्रॉर, उसका एड्रेस, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। 1-2 लाइन छोड़ने के बाद पुट द अमाउंट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ₹50,000 इन डिजिट्स। उसके बाद और 1-2 लाइन छोड़ो, पीरियड 3 months, आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यू हैव टू राइट इन दिस वे। 50 डेज रहेगा तो FIFTY 50 डेज, मी और माई ऑर्डर। अगर पे क्या होगा दैट विल सी इन सम टाइम। आफ्टर दैट लीव 3-4 लाइन्स, सेंड इट टू द ड्रॉई, ये केस में विराट कोहली है, टू विराट कोहली न्यू दिल्ली। ये लेफ्ट बॉटम था, नाउ कम टू द राइट बॉटम, इट हैज टू बी साइंड बाय द ड्रॉअर, दैट इज रोहित शर्मा, accepted, signed by Virat Kohli on 4th October 2024. So right side पे date of bill and यहाँ पे the date on which the bill is accepted. Date of bill and the date on which the bill is accepted. Got it? Now see. This was the case where there is only drawer and drawee. Suppose pay होगा तो क्या होगा? Let's see the B part. I'll explain you in this only. There are 3 variations. I'm coming to that. See the B part. What difference would it make in the above pro forma if there was a payee Shubman Gill of Punjab? What difference would have been made if there was a payee? अभी देखो, अगर थर्ड पार्टी होता तो क्या डिफरेंस होता? अंडरस्टैंड दिस। सेम 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 सेम, यहां पर डिफरेंस आएगा। 3 months आफ्टर डेट पे टू, सेम। नाउ सी रोहित, व्हाट आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, इफ देयर आर ओनली 2 parties, ड्रॉअर एंड पे रिमेन्स द सेम। तो यहां पे ड्रॉअर भी रोहित शर्मा था, पे भी रोहित शर्मा है, बट यहां पे पे अलग है। ये पैसा रोहित शर्मा को ही जाना था, इसके लिए उसने लिखा मी और माई ऑर्डर। नाउ सी व्हाट विल हैपन if there is a third party, the words will change. 3 months after date, pay to Shubman Gill, pay to Shubman Gill or his order a sum of ₹50,000 only for the value received. So
where there is a third party, instead of me or my, name of the payee or his, or agar female hai to her, male hai to his. So this is the difference. Rest everything remains the same. So I'll repeat. अगर पेई है जो मैंने बी पार्ट में दिया है शुभमन गिल, मी और माई निकल जाएगा, मी की जगह शुभमन गिल एंड माई की जगह हिज ऑर्डर. अगर फीमेल है तो हिज की जगह है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम. गॉट इट गाइस? सो अगर पेई है, ध्यान रखना. Those who are with me, I have done in the sums. Even those who have not studying the full chapter with me, just understand this. The concept gets clear. So अगर ड्रॉई है जो मैंने पहले किया वो, अगर थर्ड पार्टी पेई है तो मी और माई की जगह शुभमन गिल और हिज ऑर्डर. नाउ गाइस, सी द सी पार्ट. इसमें देयर आर टू वेरिएशंस. आई शो यू बोथ. व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक इन द प्रोफॉर्मा if the bill was accepted by Virat for 45,000? Now listen, understand this. Bill of exchange is valid only when accepted by the drawee. Bill of exchange is valid only when it is accepted by the drawee. Now understand, I have discussed in detail in objectives. Those who are studying with me, you all will understand that. Of course, those are not studying, don't worry. I'm giving you the detailed explanation now. A bill of exchange is valid only when accepted by the drawee. So when the drawee accepts the bill, understand this. एक मिनट किधर जगह, let me check the angle. थोड़ा इसको मैं एंगल चेंज कर लेता हूँ. When the bill is accepted by the drawee, it is called as acceptance. Okay? When the bill is accepted by the drawee, it is called as acceptance. Acceptance are of two types: general and qualified acceptance. Qualified is also called as conditional, but we use the word qualified. So general and qualified, दोनों में फर्क क्या है? General acceptance means it is accepted by the drawee. General acceptance means it is accepted by the drawee in the same condition as prepared by the drawer. It is accepted by the drawee in the same condition as prepared by the drawer. And general or qualified means it is accepted by the drawee, but he has put some condition. I'll repeat again. General means it is accepted by the drawee in the same condition without putting any qualification, without putting any condition. जैसे ड्रॉअर ने बनाया सेम कंडीशन में ड्रॉई हैज एक्सेप्टेड, दैट इज जनरल. क्वालिफाइड में क्या होगा? ही इज एक्सेप्टिंग बट ही इज पुटिंग अ कंडीशन. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? ही हैज एक्सेप्टेड फॉर 45. नाउ सी द थर्ड वेरिएशन. एक्सेप्टेड सेम आएगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बट यहां पे आएगा एक्सेप्टेड फॉर ₹45,000 only. This is the only difference in the C part. The rest everything is the same. Now this will be same whether there is a drawer and drawee or whether there is drawer, drawee and payee. This will be the difference. So accepted for 45,000 only. And this is 3 months. Sometimes the drawee will say I'll pay after 4 months. So we will say accepted, payable after 4 months. But generally this is the only thing comes. Sometimes they can ask you instead of 3, 4. So यहाँ पे तुम 3 लिखोगे, but यहाँ पे आएगा 4. Similarly, even though if it is accepted for 45,000, यहाँ पे तुम्हारा amount 50 आएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा amount 50 आएगा. When the drawee accepts it, he will put here as per the C part of this for 45,000 only. So this is called as qualified acceptance. Qualified acceptance means when the drawee accepts the bill, he puts a condition that he will pay but a less amount, or he will pay
but after 3 months. So yeah, suppose they say Drawee accept that he'll pay after 4 months. So we'll write accepted payable after 4 months. That when we do the regular class, that time we will see the three variations. So these are the three variations. What are the three variations? First, normal drawer drawing. Second, normal where the third party pay comes, and third where there is a condition put by the drawee, that is qualified acceptance. So this was Proforma bills of exchange. I'm sure you all must have found it super bonus, and I'm telling you honestly, यहाँ पे सिली मिस्टेक करना भी इज अ डिफिकल्ट टास्क. सो इतना स्कोरिंग है, इसको बराबर कर लेना एंड ट्राई टू ग्रैब फुल 5 मार्क्स इफ इट कम्स, बिकॉज ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. पहले ओल्ड सिलेबस में 5 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन था. नाउ यू हैव 10 ऑब्जेक्टिव्स, 10 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव. सिलेबस में मैंने डिस्कस किया है. अगेन रिपीटिंग, जिन्हें नहीं पता, see the video of syllabus and paper pattern. It is open on YouTube also, where they can ask you this or they may not ask. Agar aaya to bonus 5 marks, and I've told you all the 3 different variations. That's it guys. Today we studied what was the meaning of bills of exchange, kaise banana hai. For my regular students who are studying this full chapter with me, I'll take another 2 sessions on making more sums on this. And after that, I'll start with the main part, जो 10 मार्क का सम आएगा जर्नल एंट्री वाले का. वो भी मेरा पहला लेक्चर. I'll put it open on YouTube. There we will understand how the accounting entries are, basic accounting entries are to be passed, and other details also we will study in that. Today I have just focused on Proforma, nothing else. And when I come to that accounting part, उसके पहले भी you should know what is drawer, what is drawee, what is payee, what we study now. So that's it guys for this session. Please rewind and see. This is an open video on YouTube. Multiple times, please watch it till the time you don't understand. And those are with me, you all are watching this on app. There also I have kept more views. That's it. Please understand, get the concept, see how I made it, rewind forward karo, but see to it that you do it perfectly, because 80 में से अगर ये question आया, 5 mark bonus. That's it guys. Take care and do this properly.